हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्वांटिफिकेशन। आज का जो हम पैसेज करेंगे वो ब्रॉडली अगर मैं आपको बोलूं इट इज कमिंग फ्रॉम एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इट इज समवेयर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस बोल लीजिए, एंड इसमें काफी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। डेफिनेटली ये पैसेज जो है 100% आपका नॉन फिक्शन, राइट? नाउ let us read as to what the passage is talking about. We are still begging to be both fooled and enlightened. Humans love a spectacle. Out of all the players in the material world, I think the glass is the ultimate trickster. Although glass can illuminate rooms and lives, it can distort reality and obscure the truth. Obscure का मतलब क्या होता है? Something that is very unclear. उसको हम obscure बोलते हैं. Then we are talking about much like photography can appear as a record of true events while cropping out essential context, glass sharpens our visions, but not necessarily our understanding. Look at such a beautiful point that the author is making a mention of at the end of the paragraph, whereby we are talking about the fact as to how glass can sharpen our vision, but not our comprehension or understanding of reality and life. And also, somewhere we are talking about how we humans have this particular tendency of being fooled and enlightened at the same time. Contemporary life relies on glass more than most of us realize. It is not just in our windshields and windows. It is also in the fiber optic cables that run under our feet, pushing with meaning, pulsing with meaning. Right now, we are looking at each other via glass screens. Morrow said during one interview, making me intensely aware of a tenuous nature of our connection. Tenuous is something that's very flimsy. या जिस चीज को हम वीक बोलते हैं उसको हम tenuous. We spoke over Zoom, a service that allows people to video chat over the internet using our respective laptops in our rooms, hundreds of miles apart. He continued, we wouldn't have information screens without glass. All this is being transmitted via a light signal through really thin pieces of glass called fiber optics. Without glass, he said, we wouldn't have modern architecture, artificial lighting, natural lighting, cars, and most crucially, so much information. So basically, here we are talking about, let us say, the facts that are revolving around glass. एंड इसमें हमने कहीं ना कहीं फिलोसफिकल ट्रुथ से जो है या फिलोसफिकल प्रोपोजिशन से अपना पैसेज स्टार्ट किया. Morrow stresses the benefits of glass. It enables us to store vaccines, examine cells, and gaze at the stars. But he argues that glass is like all technology, neutral at its core. When I think about fiber optics, I think about all the good things it's done to enable communication, but it has also done a lot of harm, he said. People use social media to spread lies and hate. So basically, what are we talking about here? We are somewhere talking about the fact कि किस तरह से यहाँ पे हमने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात किया, हमने उसके बेनिफिट के बारे में बताया, एंड कहीं ना कहीं एट द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट along with all the good things that have enabled us to communicate with each other, this particular fiber optic or this particular glass or this particular technology that has evolved through glass has done a lot of harm. So we are basically talking about how lies and hate is spread over the social media. We use glass to tell our individual truths, but we can also use it to create false narratives. अब ये देखो, ये फिर से एक philosophical proposition है, philosophical implication. I would have been able to get the coronavirus vaccine without glass vials, but we also wouldn't have seen such a rapid fire spread of anti vaccine propaganda if we didn't have glass screens in our pockets. So, do you see how he is just trying to connect everything through glass? And यहाँ पे glass screens in a pocket किसको refer कर रहे हैं? He's referring to the phones जिसके ऊपर हम इतने dependent हैं. Without glass tubes, German glass bowler Heinrich Gessler wouldn't have been able to observe cathode rays. Ernest Rutherford wouldn't have been able to discover the power contained in atom's nucleus. And we wouldn't have nuclear reactors or bombs. We wouldn't know that when an atomic bomb goes off, it has the power to turn sand into glass, raining asteroid like shards. Shards hote jo smithereens hote hain, aapke pointed pieces hote hain, on the ground for people to find decades later. Maybe we wouldn't be so uncertain, so unstable in our convictions.
Here again we are talking about the fact कि किस तरह से ग्लास का जो पावर है, राइट, या ग्लास से हम लोगों को कितना कुछ जो है डिस्कवरीज हुई है, कितनी इन्वेंशंस हुई हैं, एंड किस तरह से उसको नेगेटिव वे में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया. While I agree with much of what Morrow says, I don't know if glass is truly neutral or if any technology can be said to be neutral. I think calling it neutral is a shorthand, like calling glass a solid. It is far more ambiguous, that is unclear than that. Technology isn't inert, it is not dead, it is not sleeping, right? It is not dormant. It is not a stone, it's a language. And like a language, we must accept its many uses. We can say prayers, we can tell lies. Sometimes we do it in the same breath. Now, look at how beautifully the author is trying to draw some sort of a parallel between language plus or probably glass. Just as language can be used in multitude of ways, it can be used to spread lies, it can be used to say good words to someone. It may have a lot of positives, it may have a lot of negatives. Likewise, glass ko bhi a positive, negative, kisi bhi way mein use kar sakte ho, right? And he says that I really do not know whether it is neutral, but I think it is something more or less, it is not inert either, right? It is something that draws a parallel with the language. But that's human history. It's a chain of events, one leading to another, sometimes ending in disaster, sometimes in beauty. Looking at it from one angle, it can appear full of beauty, prisms of color dancing across eons. From another, it is so much hellfire. So basically, he concludes the passage by talking about perspectives. कि आपका पर्सपेक्टिव है, अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो तो ये प्रिज्म है जहां से आपके कलर्स जो है वो डांस करके निकल रहे हैं. अगर आप इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखो, so it is much like hellfire. So basically, in this whole passage, the author is not concluding the whole of the passage with one distinct opinion. He has two opinions, which are again at two different sides of the same point, whereby one is very positive, the other is talking about a very extreme kind of a connotation. Coming to the questions. Each of the following principles, if true, adds credence. Credence का मतलब होता है validity add करना. Validity add करना मतलब strengthen करना या support करना. So this is basically a support or a strengthen kind of a question. Each of the following principles, if true, adds credence to the arguments presented in the passage, except. Now, which is the one that does not match with the rest of the passage? If you come to option number A, principle of dual nature. Everything, including technology and materials like glass, serves both positive and negative purposes. इसका mention किया तो ये तो accept नहीं हो सकता. Principle of technological neutrality. Technologies are tools without inherent moral standing. Their impact is determined by how humans use them. Correct? क्योंकि passage में हम लोगों को क्या बोला गया? Passage में हम लोगों को ये चीज categorically बोली है कि आप इसको न्यूट्रल बोल भी सकते हो, इसको न्यूट्रल नहीं भी बोल सकते. इसको न्यूट्रल बोलना मतलब एक शॉर्ट हैंड. आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट? जिस तरह लैंग्वेज का कंपैरिजन दिया गया कि लैंग्वेज को कैसे यूज करते हो, दैट इज टोटली सब्जेक्ट टू हाउ यू यूज इट. प्रिंसिपल ऑफ इनफॉलिबिलिटी. टेक्नोलॉजी अपॉन इट्स इंसेप्शन inescapably leads to outcomes that are desirable and in line with expectations. Now see, we are talking about the fact कि ठीक है, अगर मैंने कोई एटम बॉम्ब बनाना है या मैंने किसी नेगेटिव वे में टेक्नोलॉजी को यूज करना है, मेरा पर्पस तो रिजॉल्व हो रहा है. लेकिन पैसेज कहीं ना कहीं ये चीज आपको बोल रही है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की, किसी भी एस्पेक्ट की, वी हैव टू कंसिडर उसके बोथ पॉजिटिव्स एंड उसके नेगेटिव. सो सी इज समथिंग दैट डज नॉट fall in the purview of this question because author positive and negative दोनों की बात. Principle of perception. The technologies we use can influence not just what we see or learn, but also our perception of reality. हमने सेकेंड पैराग्राफ में भी वही बात की है, हमने कंक्लूजन में भी वही बात की है. कांच है, उसमें अगर आप ब्यूटी देखना चाहो आपको ब्यूटी दिखेगा, अगर उसको आप हेल फायर बोलो तो वो एक्चुअली में हेल ही हो. So the correct answer for question number 1 is option number C. Which one of the following best describes the comparison between technology and language made in the passage? Now, this was a very easy and a direct question.
लैंग्वेज का क्या बोला है? लैंग्वेज है, आप उसको पॉजिटिव में अच्छी बात बोलने के लिए, किसी के लिए गलत बात बोलने के लिए यूज कर सकते हो। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी है, वो आपके ऊपर है आप किस वे में उसको यूज। सो लाइक लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एड्स इन एनहांसिंग एंड एक्सपेंडिंग द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। नहीं, क्योंकि इसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि आप कैसा उसको यूज करना चाहते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू दैट। Like language, technology has a built-in disposition towards being beneficial and harmful. Now, we have nowhere stated that language is harmful or beneficial. We have been told you may use language for prayers, you may also use language to spread lies. आपके ऊपर है ये, आपको लैंग्वेज दे दिया गया है, लेकिन उसके जो मेनी यूजेस हैं वो आपके ऊपर हैं। We can say prayers, we can tell lies, sometimes we do it all in the same breath. एक ही टाइम पे मैंने सच भी बोल दिया, झूठ भी बोल, वो मेरे ऊपर है। लैंग्वेज ने कहीं नहीं बोला है कि मैं बेनिफिशियल भी है, मैं हाँ। Like language, technology can be leveraged for both constructive and detrimental purposes. Correct? लैंग्वेज के जैसे आप टेक्नोलॉजी को भी चाहे तो आप अपने लाइफ में कंफर्ट लाने के लिए अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप बॉम्ब्स जैसी चीजें जो है टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। Like language, technology has multiple uses depending on the need to address the issue. अगर देखा जाए तो यहां तक तो करेक्ट है, या यहां तक रादर मल्टीपल यूजेस तो हैं, लेकिन नीड टू एड्रेस एन इशू वो कहीं नहीं बताया कि आज मेरा मन है एटम बॉम्ब बनाने का, तो आज मैं टेक्नोलॉजी का उस हिसाब से इस्तेमाल करूँ। वी हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट द इशू, वी हैव जस्ट बीन टोल्ड अबाउट द फैक्ट कि लाइक लैंग्वेज, even technology has multiple uses. It is totally up to you whether you use it in a positive way or you use it in a negative way. So the correct answer for question number 2 is option number C. Coming to the last question. Glass is identified as each of the following except. A बोलता है a cornerstone of contemporary existence. B बोलता है a conveyor of reality and misrepresentation. सी बोलता है फैसिलिटेटर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, या अ कैटलिस्ट फॉर यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग। अब यहां अगर हम देखें तो हमारे को ये पूछा गया है कि आपका ग्लास जो है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एक्सेप्ट। अब ए बोलता है कॉर्नरस्टोन ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जिस्टेंस, उसने कैटेगोरिकली आपको बोला है कि आज अगर आपने रहना है सो कंटेम्प्रेरी लाइफ में हर एक चीज में ग्लास है। सोशल मीडिया बोल लीजिए, आपके फोन्स में बोल लीजिए, वैक्सीन का वायल जो है उसमें है, everything is glass around us. When you talk about the fiber optics, it is again totally dependent on glass. So yes, for our contemporary existence, we do need, it is on our windshields, it is everywhere, under our feet, everywhere. A conveyor of reality and misrepresentation. Yes, it binds you with reality. At the same time, it fools you and it obscures the truth also. उसने क्या बोला है? ग्लास आपको रियलिटी बता सकता है, it can illuminate a room. At the same time, it can distort a reality, right? A facilitator of scientific exploration. A specific, facilitator of scientific exploration क्यों? क्योंकि हमने इसको जो जर्मन एग्जाम्पल आपको दे रखा था, राइट, जहां पे कैथोड रेज के बारे में बात किया था, रूथरफर्ड का एग्जाम्पल दिया था, जहां हमने एटम का न्यूक्लियस के बारे में बात किया था, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉम्ब्स के बारे में बात किया था। So basically, yes, it has been used a lot of times for facilitating some sort of scientific exploration. Catalyst for uniform understanding. This is the odd one out. There is no uniform understanding because author कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि सारे लोग जो हैं आपका जो ये कांच है या जो आपका ग्लास है उसका एक ही यूटिलाइजेशन करेंगे, बट हमें ये बोला है इट इज टोटली सब्जेक्ट टू हाउ यू यूटिलाइज इट, जस्ट लाइक लैंग्वेज। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक का अपना एक वे है उस चीज को यूज करने के। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ which of the following best describes what the passage is trying to do? इसमें following जो है वर्ड आप काट दीजिए, ये बेसिकली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने रखा था, जहां पे अगर हमें बोला जाए कि we have to give the options as to which is the one that is going to describe the passage. This was basically to
help you understand what is the core purpose. Now, if you look at the core purpose of the passage is not just to educate us about language. It is not just to educate about class. हालांकि ये दोनों फैक्ट हैं, लेकिन कोर पर्पस नहीं है। मेरा कोर पर्पस क्या है? मेरा कोर पर्पस है डुअलिटी को देखना। मेरा कोर पर्पस है एक टू वे अप्रोच रखना। किसके लिए? ग्लास के लिए। वही ग्लास जो कहीं ना कहीं मुझे इल्यूमिनेट भी करता है ट्रुथ को, वही ग्लास जो कहीं ना कहीं डिसेप्शन पे भी लेके आता है। So basically, the most important fact or the primary intent of author behind writing this passage was duality, whereby he's talking about language, or probably as an example, and majorly about glass as a two-edged sword. कि उसका पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है। जब भी आप कोई पैसेज करते हो विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, एक बार ट्राई करके देखना कि आपके हिसाब से प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी कि what is the passage all about? Now the passage is about glass. Why has the author written this particular passage about glass? Because he wants to educate us about the fact as to how it is a two-edged sword, right? So this is how you're supposed to understand the primary purpose, what and why. So that's about it for today's class. I'll see you with another interesting reading comprehension. Till then, like I always say, keep reading and enjoy reading. Thank you.